After going through this, I hope you'll feel very confident and you will love this topic. This topic, in case of generally you are given series LCR circuit, here you are given mixed combination. It's in parallel. Capacitor, resistance, inductor, resistance. At first instance, it seems to be very difficult, but when you start calculating, say you calculate XC, 1 upon omega C is XC, this gives you 100, 100 into 10 to the power minus 6, omega is 100, given to you. This comes out to be 100 ohm. Now, then it becomes very easy because this is 100 ohms, this is 100 ohms. So your Z1 comes out to be 100 root 2 and I1 is equal to 20, voltage divided by, because in parallel voltage will be same, 20 divided by 100 root 2, that is 1 upon 5 root 2, and 10 phi 1 is equal to R by XC. R will be like this, XC will be like this. This will come out to be 45 and current leads the voltage for the upper case I1. Second case, inductive circuit, again if you calculate omega L, it comes out to be 50 ohm and resistance is 50 ohm. Again I2 is equal to 20 divided by 50 root 2, 2 by 5 root 2. I have kept it just like this. 10 phi 2 is equal to R by, here will be R, here will be XL. So it will be 45. 10 phi 2 is equal to R by XL is equal to 1. Phi 2 is equal to pi by 4. Current lags the voltage by pi by 4. If you want to make circuit, because it's a case of parallel voltage will be same, I1 will be here leading by 45 and I2 will be here. To calculate I, you will take I1 square plus I2 square because they are perpendicular to each other. 1 upon 50, 4 upon 50, 5 by 50, 1 by root 10 equal to 0.3 ampere approximately. I want to tell you, if he is interested in more calculations, then what you can do is, if he says find out XR, then first case mein I1 into R will be XR. I1, what is I1? I1 is 1 upon 5 root 2 into R is 100. This gives you 20, 10 root 2. This voltage across R1. Voltage across R2, whatever calculation you want, I2 into R2. I2 is 1 upon 2 upon 5 root 2 into R2 is 50. Again 10, 20, 10 root 2. This voltage 1. Similarly, if he is interested in X, voltage across C, you can find out I into I1 into XC. Voltage across L is equal to I2 into XL. This way, whatever is asked, you can calculate the different values. In this question, there is a circuit with a battery 4 volt. Current going through the circuit is 2 ampere at a given moment, and rate of increase of current is 4 ampere per second. Remember this is increase. If it is increase, the voltage developed across inductor will be opposite to the current flowing, because it is rate of increase of current. It would have been, अगर ये decrease होता तो ये minus plus होता. यही बस ध्यान रखने की बात है. Then आप अप्लाई करिए किरचॉफ लॉ, ए से चलिए अप 4 वोल्ट माइनस आर आई 2 into 1 minus L di by dt. L is 1 Henry, di by dt is 4, plus Vc is equal to 0. This gives you 4 minus 4. Vc is equal to 2. Plus का 2. Plus means it is rising. Rising means from low to high. Minus to plus. Therefore, Cv is equal to voltage 3 into 2, 6 microcoulomb. Now remember, this polarity is minus plus.
in going from A, B, C, D, it is positive. Positive means low plate to high plate. If you name these plates as P and Q, whatever you want to name it, X, Y. So X plate will be negative, Y plate will be positive. This is the importance of this question. 6 microcoulomb, polarity wise, minus polarity plus polarity. ये केस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है. ये गिवन एलसीआर सर्किट. जब आप इमीडिएटली, क्योंकि आपको आईआरएमएस दे रखा 2.2 एम्पियर, जेड की वैल्यू होगी V डिवाइडेड बाय आई 220/2.2 100 ओम. अब आपको इमीडिएटली थोड़ा दिमाग घूम जाएगा कि ये तो रेजिस्टेंस ही 100 ओम है. क्लियरली इसका मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव. इसका मतलब एलसीआर सर्किट इज एट रेजोनेंस. ये और ये एक्सएल और एक्सी आपस में काट रहे होंगे. एक्सएल और एक्सी आपस में काट रहे होंगे. दैट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है. इसलिए एक्सएल की वैल्यू आपको पता है ओमेगा इंटू एल 1/पाई इंटू 100 पाई इक्वल 100 ओम. इसका मतलब इनडायरेक्टली एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम है. अब पावर फैक्टर जनरली आपको किसी भी जगह का दिया होता है, एलसीआर सर्किट का दिया होता है, लेकिन आप कहेंगे पावर फैक्टर एट रेजोनेंस तो क्या 0 होता है, 5 0 होता है, तो पावर फैक्टर क्या होता है 1 होता है cos 5. लेकिन ये इज नॉट इंटरेस्टेड इन पावर फैक्टर का होल सर्किट. क्या वो जानना चाहता है ये जो बॉक्स बनाया हुआ है इसका पावर फैक्टर क्या है. तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, फॉर बाय ये बॉक्स के लिए R is equal to 100, XC is equal to 100, तो Z फॉर द बॉक्स, Z जो है वो इक्वल टू 100√2 आ जाएगा बॉक्स के लिए. इसलिए फाई cos फाई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100√2 इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा. सो एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में आपको पूरा एलसीआर सर्किट दिया, बट ही वांट्स टू नो कि पावर फैक्टर का आपको रियल मीनिंग पता है, तो इसलिए उसमें पर्टिकुलर सर्किट कंपोनेंट का आपसे पूछ लिया गया. सो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. एक इंडक्टर दे रखा है. आइडियल इंडक्टर नहीं है. डीसी वोल्टेज जब अप्लाई किया जाता है तो करंट 1 एम्पियर का आता है. इसका मतलब इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है. जब एसी वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो इंपीडेंस जो है वोल्टेज अपॉन आई करके 200 ओम आ जाएगा. यहाँ से Z² इज इक्वल टू R² प्लस XL का होल स्क्वायर आ जाएगा. XL जो है वो 100√3 आ जाएगा. 2 पाई FL ओमेगा इंटू एल होता है. XL इज इक्वल टू ओमेगा एल. 2 पाई FL इज इक्वल टू 100√3, L इज इक्वल टू 0.55 हेनरी आ जाएगा. दिस इज द आंसर. Is induced electric field due to a varying magnetic field, which is time varying. So EMF is equal to, according to Faraday's law, d phi by dt. There is a minus here, but magnitude is EMF is equal to d phi by dt. E dot dl, that is induced EMF. Line integral is equal to a dv by dt. There is a flux. Okay. Now, if x is less than a, you are somewhere here inside, then E into 2 pi x. Line integral is E into 2 pi x. E is tangential, dx is here. So continuously you can write E into 2 pi x is equal to pi x square dv by dt if x is less than a. Therefore electric field is equal to 1/2 x dv by dt, directly proportional to x. If you are outside, if you are somewhere here, magnetic field is changing only for pi a square. It's changing only for pi a square into dv by dt. Then in this case, E is equal to pi से pi कट जाएगा, a square dv by dt by 2x. It will vary as 1/x. So this is the variation of electric field as distance from the center is varied. I hope you enjoyed all my 4 lectures of EMI and AC. Thank you.
Keep watching.